Good evening, everyone. So today we are going to start a new topic. What the name of this topic is? Do you know? Electroacupuncture vessels, So the name of this topic is according to Dr. Voll. electroacupuncture. As per the Dr. Bowl, it's a very big topic, but very effective. Very, very big topic and very effective. Last year in the 2023, means not last year, means more than 1 year, we have conducted the Dr. Bowl level 1. And this time we are going to work for the level 1 as well as the level 2. अब लेवल 1 हम लेवल 2 दोनों की बात करेंगे और दोनों मिलाकर बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत लोगों की इच्छा के कारण हम अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं. इन द शॉर्ट वी आर टेलिंग EAB, electroacupuncture according to Dr. Bowl. In this acupuncture system, Dr. Bowl used to work with this device. This device is called dermatome in the Germany, right? There are many different devices available in the Germany. Like we can see, there is a different variation here. This is also dermatome. But in India, we are working with the needles, with the magnets. We can see here, magnets. हम भारत में इतने अच्छे रिजल्ट्स पैदा कर रहे हैं निडल और मैग्नेट्स के द्वारा, क्योंकि सब लोग इस डर्मेटोम को नहीं खरीद सकते. डर्मेटोम की जो प्राइस है, इट्स इन मेनी लैक्स, राइट, मेनी लैक्स, 4-5 लैक्स प्लस. लेकिन जब सेम रिजल्ट्स हमें वो जो 300 रुपीज के पेन से मिलता है, तो फिर डर्मेटोम तक क्यों जाना? एंड वी आर एबल टू गेट द रिजल्ट्स. हम वो जो 500 रुपए से स्टार्ट होकर 3000 की रेंज तक जो आता है इलेक्ट्रिक पेन, आई विल शो यू दैट ऑल्सो, उससे भी हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. What is the beauty of this system? Being the patient, because many patients coming to me nowadays, I'm giving offer to my patients. You want acupuncture with needle or you want acupuncture without needle? Because there are many females suffering with a polycystic ovary disease, many kids, but they are scared with the needle. Okay, I'm asking, tell me, are you comfortable with needle or without needle? So if they are want to go without needle, then I will do many other treatments like the Dr. Bowl system. I will use electric pen, the electrostimulator, or some other system. There are many systems, and these patients also getting very good results, right? Very, very good results. Because we know the points, then we have various way to stimulate the point. So now, the Dr. Bowl was basically allopathic doctor from the Germany, and who discussed this wonderful system. And this is really boon for all the healers, because now we can do the treatment without needle. We can do the acupuncture without needle, and it's a very, very effective, very effective. So Dr. Bowl did the research of the electroacupuncture in the 1950. 1950 में उन्होंने इस चीज की रिसर्च की थी, और उसके बाद बहुत सारी पुरानी और नई बीमारियों का
कॉम्प्लेक्स डिसीज एंड द क्रॉनिक डिसीज का ट्रीटमेंट आसान हो गया. So now the Dr. Boole has given by the intensive research, he has discovered these 9 extra meridian. हमारे जो मेरिडियन है वो तो अलग है, like we know we have lung meridian, we have heart meridian, pericardium meridian. हमारे जो TCM में भी, in the TCM we are having meridian. But the Dr. Boole has done the research of these 9 extra meridian, 1, 2, 3, we can see here, 4, 5, 6, 7, 8, 9. उन्होंने एक 9 नए मेरिडियन की खोज की. Like we can see lymph basal meridian, nerve degeneration meridian, allergy meridian, organ degeneration meridian, joint degeneration meridian, fibroid degeneration meridian, skin degeneration meridian, fat degeneration meridian, and eye orbit meridian. ये 9 मेरिडियन की खोज के कारण डॉक्टर बोल का सिस्टम एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम बन गया है. नाउ दिस हैज बिकम ए रियली वेरी यूजफुल फॉर ऑल द क्लिनिशियन, right? Because the lots of patient coming to us with a swelling. Some person is having swelling in the leg, some person is having swelling in the feet or in the different part of the body. Then we have to do the lymphatic drainage. हमें कई बार lymphatic drainage करना होता है in the swelling. The lymph meridian is very good meridian for doing the cleansing, because lymphatic system is the system who is doing cleansing, who expelling the pathogens, bacteria and the viruses. हमारे शरीर में जब भी किसी बैक्टीरिया और वायरस का आक्रमण होता है तो हम lymphatic drainage करते हैं. So we have lymph meridian. There are many people suffering with the problem of the nerve, like nerves. We are having too many problems which is connected to the nerves, like sympathetic nerve, parasympathetic nerve, vagus nerve, median nerve. There are lots of nerve in the body. Now we can work on nerves via nerve degeneration meridian. Neurological problems के जितने भी patient आते हैं, we can work on the nerve degeneration meridian. We can work on the AD meridian or the allergy degeneration meridian for many allergic problems. Like we can see the allergy from the pollen grains, allergies of cough and cold, allergic asthma, allergic skin problems, and all. For the skin problem, we have one more meridian that is called skin degeneration meridian. It's a very good meridian for skin and especially for a scar. I would like to ask you, do you know what is scar? क्या आप जानते हैं कि scar क्या होता है? Anyone? What is scar? Like when we are getting some injury, उसके बाद जो निशान रह जाता है, जब चोट लगती है उसके बाद जो निशान रह जाता है उसे हम कहते हैं scar. After getting the injury, when some sign is left, that is called scar. After doing the cesarean delivery to the female, there is a one mark in the lower abdomen. After doing any surgery, doing surgery of gallbladder, doing surgery of hernia, doing surgery of spine, during the surgical process, there is a cut. Then there is a formation of the scar. And I will tell you, the lots of problem happening in the body because of that scar. We are ignoring the scar. हम scar को ignore कर देते हैं. हम scar को treat नहीं करते. But Dr. Boole has told, do not ignore the scar. If anyone is having a scar anywhere in the body, आपके पास पेशेंट बोल रहा है कि मुझे नी पेन है. Okay, you are having knee pain. Yes, yes. Okay, then do you have done surgery sometime or any old injury? Yes, I have done surgery. My gallbladder removed. Okay. So do you have some cut? Yes, I have cut. We have to work on that scar also. Until and unless we work on that scar, the keloid is a different condition. Keloid we are not counting in the scar. But when we talk about the scar, I have seen as soon as we are working on the scar, we can see the effect of the knee pain patient. I've seen few last week,
I treated one patient suffering with a knee pain. He has done the surgery of hernia. उस पेशेंट ने हर्निया की सर्जरी करवाई है, तो उसका स्कार बना हुआ है लोअर एब्डोमेन में. ही इज हैविंग स्कार इन द लोअर एब्डोमेन. I treated with the skin degeneration meridian, that scar, and immediately he got very good results in the knee pain because energy gets stuck around the scar. So we cannot ignore the scar. Any scar, even with the female or after the delivery, जो स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं एब्डोमेन पर. हैव यू सीन द स्ट्रेच मार्क इन द फीमेल आफ्टर द डिलीवरी? दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्कार, and we need to treat that scar if we want to create the very good results. Patient will be telling you, can you treat my lower back pain? Then we have to work on the skin degeneration meridian and we have to work on the scar. And this is given by Dr. Voll. No any other person has given this. So this is the very beautiful discovery of the Dr. Voll, and he is told work on scar, work on skin degeneration meridian here. So we can see this is the skin degeneration meridian or the SK meridian. We will treat the skin and the scar, right? Now, there are many persons suffering with a very difficult disease, like we can see cancer. So we are working on the organ degeneration meridian, and it's not only the cancer, but it's any deep rooted problems. We are doing very deep level of the cleansing. So we are working on the organ degeneration meridian, right? Okay. So we will be discussing these all meridian in the level 1. In the level 1, we have the detailed discussion of each and every meridian. Now we are coming to the joint degeneration meridian or the JD meridian. So JD meridian or the joint degeneration meridian, like we have to work on the joints. We are having the problem in the joints, like the problem of the knee joints, ankle joints, finger joints, or even in the, suppose we are having lower back pain. So the joint between the vertebrae, joint L4, L5, between the L4, L5, there is joints. We are having pain there. तो हमारे शरीर के जो भी joints होते हैं, चाहे वो ankle joint हो, wrist joint हो, हमारे जो दो कमर स्पाइन के दो वर्टिब्रा के बीच के जॉइंट्स हों, उन सारे जॉइंट्स को हम ट्रीट करने के लिए हम जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन का प्रयोग करते हैं. नाउ डॉक्टर बोल आल्सो हैज गिवन द फाइब्रोइड डिजनरेशन मेरिडियन. सो फाइब्रोइड डिजनरेशन मेरिडियन लाइक अनवांटेड ट्यूमर, ग्रोथ, सिस्ट, हमारे शरीर में होने वाली जो भी अनवांटेड ग्रोथ होती हैं, सिस्ट होती हैं, ट्यूमर होता है, उसके लिए हम फाइब्रोइड डिजनरेशन मेरिडियन का प्रयोग करते हैं. So this is the FIBD meridian. Now, fat degeneration meridian. This is the given by the Dr. Voll in the traditional Chinese medicine. We can't see this meridian, fat degeneration meridian. This is the special discovery of the Dr. Voll. हमारे शरीर में बनने वाली फैट की गांठें, हमारे शरीर में जमा होने वाला फैट, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल्स, इन सबको हम फैट डिजनरेशन मेरिडियन से वर्क करते हैं. एंड वेरी वेरी स्पेशल डिस्कवरी ऑफ द डॉक्टर बोल, दैट इज आई ऑर्बिट मेरिडियन. आई ट्रीटिंग द आईज, हम आंखों का इलाज करते हैं. वी आर ट्रीटिंग द वेरियस डिसीज ऑफ द आईज. व्हाई दिस? सो दीज आर द वेरी वंडरफुल डिस्कवरी ऑफ द डॉक्टर बोल, एंड दीज 9 meridian given by Dr. Voll, which is not there in the ट्रेडिशनल मेडिसिन. तो क्वेश्चन आता है कि अगर किसी ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का अध्ययन नहीं किया है तो क्या वो इन मेरिडियन को समझ सकता है? आपको आज ही पता चल जाएगा जब हम थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. इनका डिस्कशन आसान है. दिस इज ऑल्सो ट्रू, everyone should have the knowledge of meridian, like 12 merid plus 2 meridian, because whatever you do, that meridian are the basics. But these 9 meridian given by the Dr. Voll entirely different. Today we will be learning 1 point from each meridian. So let's see here. Now, what Dr. Voll has done. Dr. Voll ने और क्या किया? Dr. Voll ने इन 9 मेरिडियन की खोज की, right? It was the great discovery.
So we have seen the 8 meridian है starting from the fingers or the toes, या तो हमारे हाथ की उंगलियों से स्टार्ट हो रहे हैं. Now we can see here, I will show you shortly. So these meridians are starting from the fingers and the toes, and one is the eye meridian, which is on around the eyes, हमारी आंखों के चारों ओर होता है. Okay, one more thing, Dr. Voll has given little. Dr. Voll what has done, he has explained some different concept about the meridians, like we talk about the kidney meridian, है ना. तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि डॉक्टर बोल का किडनी मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, सो डॉक्टर बोल हैज डिस्कस अबाउट द each and every meridian. Like I will give you one example about the spleen meridian, right? So we are having spleen meridian in the right side of the body, and we are having spleen meridian on the left side of the body also. So just for a quick reference, I will show you the spleen meridian. मैं आपको spleen meridian show कर देता हूँ. Just your quick reference, right? So let's see here. So this is the spleen meridian. We can see spleen meridian is starting in the feet. Okay, that is the location of spleen 1. Then spleen meridian is going like this. यहाँ से हमारा spleen meridian ऊपर जाता है. So we have spleen 2, we have spleen 3. In this way, spleen meridian is going through. So now, in this way, the spleen meridian is continuously traveling and finally coming in the chest cavity, हमारे छाती में आकर खत्म होता है. So we can see the last point of the spleen meridian, that is spleen 21. Okay. Now see the entire route in one another image. अब हम एक दूसरी इमेज में इसका पूरा रूट देखते हैं. तो how the spleen meridian is starting from the feet and reaching to the chest cavity. Okay. So look at here. So see here. Now we can see in the both leg, spleen meridian is starting from the great toe, crossing the ankle and knee, crossing the area around the genital part, and finally ending at the chest. So Dr. Voll told there are 2 spleen meridian in the human body. So what Dr. Voll told? So right side spleen meridian we will consider as a different, and the left side spleen meridian we will be considering as a different. So the right side meridian we will be considering as a pancreas meridian, and the left side meridian we will be considering as a spleen meridian. Everything is same. Like here we are telling spleen 1, and here we will tell pancreas 1. So these some little bit changes has explained why the Dr. Voll कुछ ऐसे परिवर्तन डॉक्टर बोल ने किए जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं. Okay. So my question is this: pancreas meridian on which side? Right or left? Right side. Right side. Right side. Right side. Right. Spleen meridian on which side? Left side. Left side. Left side. Right. Left. Left. So now what is the importance of this? अब इसका क्या importance है? इसका importance ये है if we are working on the left side, we are working on the spleen meridian, and we are working on the blood chemistry. With the help of the spleen, we know in the TCM also, we are telling, okay, if you improve the spleen, then you can digest, absorb the food properly. अगर आप spleen को improve करें, तो आप खाने को अच्छा absorb कर सकते हैं, and you can, आप अपने blood को बढ़ा सकते हैं. आप अपने RBC को, WBC को बढ़ा सकते हैं. You can improve the RBC, you can improve the WBC, you can improve the blood chemistry if you work on the spleen. So now tell me, if the person is suffering with the blood deficiency, you are working on the right spleen meridian or the left spleen meridian? Left. Left.
हम अगर लेफ्ट साइड में वर्क करेंगे, we can improve the hemoglobin, we will able to work on the WBC, we will able to improve the blood chemistries. In the same way, Dr. Bull told, if you are working on the right side, अगर आप right side में work करते हैं, then you are working on the pancreas meridian, and the pancreas meridian is connected with many important disease like diabetes, very important disease. So we will also discuss the protocol of the diabetes, and in the protocol of the diabetes, we will see we are working on the right side. Okay. Not only this, we know the gout is very common disease nowadays. Increase uric acid. Uric acid ka बढ़ जाना, it's a very common disease. We will be working on the right side. Why we are working on the right side? Because pancreas is the organ in the human body, हमारे शरीर में पाए जाने वाला pancreas एक वो organ है, pancreas, who secrete many enzymes. Like who secrete many enzymes? LAT. Lipase is digesting the fat. Amylase is digesting the carbs, carbohydrate. And trypsin is digesting the protein. So pancreas alone can digest the fat, carbohydrate, and protein. Now I want to work on the uric acid. I want to work on the gout. I want to work on the protein metabolism. If I work on the pancreas, then I will get the results. So as per the Dr. Goal, if the person is having high uric acid and having gout, then work on the pancreas meridian. So where we are going to work on the right side or the left side? Right side. Right side. We will be working on the right side. Got it? Okay. Now in the same way, just I explained you, if we want to work on the fat metabolism, where we are going to work? Right side. Right side. Because just we discussed the pancreas secreting the lipase, which is working on the fat metabolism. Okay. Now, if I want to work on the carbohydrate, means sugar, where I will work on the Right side. Right side. so now whether I want to work on the fat or I want to work on the carbs or sugar or I want to work on the protein like the uric acid, I will work on the right side Right. on the pancreas meridian. But I want to work on the WBC, I want to work on the RBC, I want to work on any type of the blood issue, I will work on the Left Left side. side. left side, spleen meridian. Right side is spleen, or we can tell pancreas meridian. So now we can understand this is a really very good discovery by the Dr. Bowl. डॉक्टर बोल के द्वारा ये बहुत ही शानदार एक डिस्कवरी की गई है और इसके माध्यम से हमारे रिजल्ट्स काफी बढ़ जाते हैं. Okay. The most beautiful thing is this: we can stimulate all the points just by the seeds or the magnets or by electric pen or by any needles also. That is our choice. Okay. So we have seen many person is having any type of the problem of the gout or the uric acid, fat, diabetes or the sugar, or albumin means protein problem. Albumin metabolism, it's a very important metabolism. We will discuss, then you will understand. जब एल्बुमिन हमारी यूरिन में ज्यादा जाने लगता है तो डॉक्टर बोलते हैं आपकी किडनी खराब हो गई. ओके, योर किडनी इज नॉट वर्किंग. क्या हो गया? नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया. So how to work on the albumin? We have to work on the pancreas meridian. So in this way, this is a very important discovery. Now, eye orbit meridian. There are too many diseases of the eyes. Like we can treat the problem of the retina. We can work on the macula. We can work on the cornea, cataract. We can work on the various part of the eyes. हम आंखों की अलग अलग बीमारियों पर जैसे ग्लोकोमा, आंखों में कैटरेक्ट हो जाना, ग्लोकोमा को लोग काला पानी भी कहते हैं, है ना. ये इतनी बीमारियां हैं. देयर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स लाइक
भी हमने जब लेवल 1 किया था उस समय जब हमने आई का डिस्कशन किया था तो कई पार्टिसिपेंट्स ने जब ट्रीटमेंट किया तो नंबर कम हो गए थे आंख, है ना, सिर्फ क्योंकि वी विल इन द डॉक्टर बोल इज गिवन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नियर डिस्टेंस एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फार स्पेक्स। हमें दूर का चश्मा और पास का चश्मा, ओके, उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। we are having very good point, the fixed protocol, just apply this protocol and you see the results, okay। तो आप जब हम किसी ने कोई है अभी उस ग्रुप में से जिसने आंखों का प्रोटोकॉल, प्रीति जी आपने किया था ना, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस फॉर ए क्विक। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैंने किया था सर। जैसे उस समय कोविड का भी टाइम था जब हम लोगों ने ये किया था, तो बहुत लोगों के कंप्यूटर पे काम करने से आंखों पे स्ट्रेस आ रहा था, ब्लड विजन हो रहा था। एक दो सिटिंग में ही उनको ग्रोथ का प्रॉब्लम भी चला गया आईज से, उनके ब्लड विजन चले गए, और एक दो पेशेंट का तो नंबर भी पॉइंट्स से कुछ कम हुआ। So as per the Preeti ji experience, she tried, even not only Preeti ji, there are many other person also tried. And what is the results came? Results was the reduced number of the eyes and many other problems like improvement in the blood visions and many other things. Here, Preeti ji, you want to share? यस सर। Yeah. सर मैंने खुद ने भी ग्लूकोमा का केस किया है। मेरी मासी थी, उनको 30 इयर्स से था ग्लूकोमा का। तो अमेरिका के डॉक्टर्स को भी बताया था, तो उन्होंने बोला इसका कोई इलाज नहीं है। जस्ट आपसे फिनिश करके मैंने उनको ट्रीट किया। अभी वो 1 साल से पूरा नॉर्मल है, सब ड्रॉप्स वगैरह सब है। So Preeti Savlaji also treated the patient of glaucoma. Even I have treated many patients of the glaucoma and we have seen very good results in the glaucoma. So there are very good protocols and we have to apply. Okay. So 2 feedback is enough. Okay, let's proceed here. Thank you for feedback. Okay. थैंक यू सर, Thank you. आपकी वजह से हमने ट्रीट कर पाए उनको। Welcome. So now we can see here. So the very great discovery, like in the eyes, we are having many nerves, like the trochlear nerve, oculomotor, and we have treatment for each and every nerves, right? So, Dr. Bull, I purchased this machine. मैंने ये machine मंगवाई थी. Like मैंने ये like this machine is available on the Amazon and also it's available in the German. So initially I was using this machine. Then after that, I was using my small electrostimulator, which was costing 700 to 800 rupees. I was getting the same results. So I just start working with my electrostimulator. ये मशीन मैंने मंगवाई थी, करीब 45 to 50,000 की मशीन मैंने मंगवाई थी जर्मन से. I will show you again this machine. And even some more person also, my students also brought this machine. So this is the machine. It's even right now available on the Amazon. This is the machine of Dr. Bowl, costing 40 to 50,000 rupees, but giving the same results. What results coming with our small electrostimulator pen? So either you can invest the 50,000 rupees here, or you can just work with the 700, 800 rupees. That is same results coming. Okay. Then I started working from this, because if I'm working with this, so any of my students, anyone seeing me doing the treatment, he can also get confidence that this machine will create the results, because everyone cannot buy this expensive machine, right? Even this machine is very expensive, Dermatome. It's a cost many lakhs, right? Okay. So we can do the treatment using the seeds. We can do the treatment using this machine. We can do the treatment by the dermatome. We can do the treatment using magnets. Everything give the results. The real thing, our point selection. The main thing is our point selections, right? Okay. So in the Dr. Bowl, we have discussed. In the Dr. Bowl, we have 9 extra meridian, and the special one is eye orbit meridian. In the eye orbit meridian, we have very good treatment for glaucoma
for nerve problem, the eyes, problem of conjunctiva like seasonal allergies, and many other problems like problem of optic nerve and all. तो आंखों की इन बीमारियों का काफी बेहतरीन इलाज है। हमने ग्लोकोमा के कई पेशेंट ट्रीट किए जिनका आंखों का प्रेशर काफी हाई था और ट्रीटमेंट के बाद वो प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो आंखों के अंदर जो प्रेशर होता है, आंखों के अंदर का प्रेशर 15 to 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। आंखों के अंदर का प्रेशर जैसे हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है 120/80। In the same way, in the eyes we are having blood pressure 15 to 20 millimeter of mercury. But when this pressure is increasing, then it's creating glaucoma. But we can work in the glaucoma very nicely with this treatment. So now, again, I will show you quickly in the Dr. Bowl. First, we are going to discuss introduction, principles. Okay. The principles is very important. Fundamentals. And there is a special thing that is called foci and general protocol, right? Then we are discussing a special point given by Dr. Bowl, like CMP point, SMP point, PSMP point, RP point, and few more. ऐसे कई point Dr. Bowl ने बताए हैं और उनको ये नाम दिया है CMP, SMP, right? Today we will discuss about CMP, right? Then the principles is here. Every disease having some phase. तो उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी बीमारी पहले हमारे अंदर प्रवेश करती है फिर बढ़ती है, तो उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं उसे हम फेज कहते हैं। डॉक्टर बोल ने बताया, डॉक्टर बोल ने कहा कि when the patient is coming to you, oh, I am suffering with disease. Suppose patient is telling you, oh, I got diabetes. हमने पूछा आपको डायबिटीज हो गई, कब से हो गई? वो just 15 days. Then as per the Dr. Bowl, it's not the 15 days that the patient already has crossed 3-4 stages. हमारी 6 जो अवस्थाएं होती हैं उसमें से वो पहले से 3-4 अवस्थाएं पार कर चुका है। तो जब डिसीज प्रकट होती है तब वो काफी आगे की अवस्था में होता है। तो एज पर द डॉक्टर बोल, वी हैव टू वर्क टिल द रूट। बिकॉज अगर किसी ने बोला कि मुझे डायबिटीज हो गई है 15 दिन से, उसे 5 दिन में 10 दिन में ठीक करना संभव नहीं है, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन द डीप, सो इट विल टेक टाइम। सो whenever any disease happening, the person is already crossing many stages. Person is crossing first stage, second stage, third stage, fourth stage, and many times reaching on the 5th stage, and sometimes also reaching on the 6th stage, like we have seen in the cancer. Now patient is telling you, okay, developed the cancer, just detected last month, अभी पता चला लास्ट मंथ में, लेकिन वह ऑलरेडी आखिरी अवस्था में पहुंच चुका है। तो हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, दैट इज द मेन थिंग्स। सो एनी डिसीज हैविंग मेनी signs, okay, we will discuss them. We will be discussing the lymph meridian. So this is the lymph meridian. We will discuss the nerve degeneration meridian. We will discuss the allergy meridian. We will discuss the organ degeneration vessels. We will discuss joint degeneration vessels, fibro degeneration vessels, skin degeneration, fat degeneration. And then in the level 2, the very advanced system, the eye will be discussed in the level 2, the disease of the eyes, okay, and the disease of the head and neck, like the tonsils. The treatment of tonsils is very much important, because if we treat the tonsils are like a microsystem of the human body. टॉन्सिल्स माइक्रोसिस्टम की तरह होते हैं। हम टॉन्सिल्स का इलाज करके पूरे बॉडी का इलाज कर सकते हैं। जैसे हम सुजोग करते हैं, सुजोग हम हाथ में ट्रीटमेंट देते हैं, पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट हो जाता है। लाइक वी इन द सुजोग वी डू द ऑरिकुलर थेरेपी, वी जस्ट ट्रीट वन पार्ट लाइक ऑरिकल, वी कैन ट्रीट एंटायर बॉडी। इन द सेम वे वी कैन ट्रीट द टॉन्सिल्स, वी कैन वर्क ऑन द एंटायर बॉडी। वी कैन ट्रीट द टीथ, वी कैन वर्क ऑन द एंटायर बॉडी। ईच एंड एवरी टीथ इज हैविंग कनेक्शन विद different meridian. We can treat the eyes, and by treating around the eyes, we can work around the body. So there are many things like eyes, jaw, sinuses we are going to discuss.
Then the disease of the arm, disease of the feet, and the very important topic, this endocrine glands, like pituitary glands, pineal gland, thyroid, parathyroid, all the endocrine glands, pancreas, ovary, like polycystic ovary, testicular problem, we are in the pipeline. Now, there are many organs having problem like lungs, large intestine, these all organs. This also we have to discuss. And different type of the arteries. Okay. The disease of the spinal cord and the disease of the nervous system, the disease which is due to the allergies like hay fever, asthma, dental allergies, and many other allergic problems, blood diseases like uric acid, carbohydrate metabolism like the diabetes, fat metabolism, and then very special conditions like constipation, ear problem, and many more, lower back pain and all, skin allergies, fatty liver and all. The disease of the heart, and there are many diseases. This is written here. This is we are going to discuss. So the very huge syllabus, we have to make a very proper systemic plan to understand each and everything. Because once we understand this, we can run our clinic very nicely with a very, very good confidence, because we will able to create the results. Nowadays, what patient coming to us? हमारे पास कैसे patient आते हैं? Lower back pain, knee pain, uric acid, diabetes, not able to digest the fat, and these all patients are coming to us. They're suffering with the nervous system problem, joint problem. So we can treat all disease by this system. So this is the syllabus, because today is the first day, so I discuss the syllabus. And whenever everyone is asking, I was telling them this very huge syllabus. This course equal to 3-4 courses, but we will try to work and try to understand each and everything very properly, right? So let's move ahead. And what is the difference between TCM and the Dr. Voll? There is one difference. Dr. Voll has given 9 extra meridian, and the very special meridian is the eye orbit meridian. ये एक बड़ा अंतर है TCM में और डॉक्टर बोल ने, कि डॉक्टर बोल ने ये 9 मेरिडियन अलग से दे दिए, जिसमें आंखों का एक अलग मेरिडियन है जो हमने भी समझा. लाइक क्विक फॉर योर क्विक रेफरेंस आई विल शो यू इमेज. मैं आपके सामने इमेज शो करूंगा. लाइक वी कैन सी हियर इन दिस इमेज, like we know lung meridian, we know our meridian, but I will discuss extra meridian. So see, this is the lymph meridian, and here we can see the nerve degeneration meridian, right? Here we can see the allergy degeneration meridian. Here we can see the organ degeneration meridian. Here, so in this way we can see the many meridian which is not given in the TCM. So we can see here, if we see this other image, then we can see this joint degeneration meridian, JD, joint degeneration meridian. We can see the fibroid degeneration meridian and the skin degeneration meridian. So the fibroid and the skin. By fibroid, we can see work on the tumor. By skin, we can work on the scar. We have fatty degeneration meridian, fat. So in this way, Dr. Voll has given the 9 extra meridian, and one is the eye orbit meridian. We can see there are lots of points around the eyes. हमारी आंखों के चारों ओर कितने सारे points are. We can see in this image. If we treat this, we can work on the each and every problem of the eyes. Like I have discussed, even the cataract, even the vision problem, far, like you can't see the far, you can't see the near objects and all, we can work on this. So now we can see whenever any meridian is going from the finger or somewhere. So I told you that Dr. Voll has given many points. Dr. Voll ने कुछ point mention किए हैं, right? तो पहला प्रश्न आता है कि क्या, एक मन आता है कि ये पेनफुल है. डॉक्टर बोल का सिस्टम बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो करंट भी देते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन यूज करते हैं, सो वी आर यूजिंग द करंट एज
very minimum level like 5.5 to 11.25 microampere voltage. Even patient cannot feel sometime, but results will be there. इतना कम वो पेन से जो करंट जाता है इतना माइक्रो करंट होता है कि पेशेंट को पता नहीं चलता, लेकिन रिजल्ट क्रिएट होता है. So now different points given by the Dr. Voll, CMP, RP, SMP, PSMP and these all. So let's discuss what is CMP. चलिए अब हम डिस्कशन प्रारंभ करते हैं. हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया. हमने डॉक्टर बोल के बारे में समझ लिया. डॉक्टर बोल ने क्या एक्स्ट्रा दिया वो भी हमने समझ लिया. डॉक्टर बोल का सिस्टम टीसीएम से थोड़ा अलग है वो भी हमने समझ लिया. और हम क्या इस कोर्स में डिस्कशन करने वाले वो भी हमने समझ लिया. वी हैव डिस्कस ऑल इंट्रोडक्शन, सिलेबस एंड ऑल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ सीएमपी पॉइंट. व्हाट इज सीएमपी पॉइंट? So CMP points like the Sue stream point. It's a very simple concept. What is Sue stream point? If you have discussed the TCM, in the TCM we are telling like हम TCM में बात करते हैं. The every meridian is having 5 very important points. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. The third number point is the point, it is very important point, the third number point. Because it's the central point. The 2 point before this point and 2 point after this point. For example, let's talk about the lung meridian. हम lung meridian की बात कर लेते हैं. तो अगर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, let's talk about the lung meridian. So lung, you will confuse, so I'm not talking about the lung meridian. So let me talk about the simple concept. अगर प्रत्येक मेरिडियन में पॉइंट्स हैं, सपोज x, y, z and z1, z2. So the third number point is called Sue stream point. प्रत्येक मेरिडियन का जो तीसरे नंबर का पॉइंट कहलाता है Sue stream point कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं. If we talk about the lung meridian, if we talk about the heart meridian, if we talk about the pericardium meridian. So this is the lung, this is the heart, this is the pericardium. In the lung meridian, we have lung 11, lung 10, lung 9, lung 8, lung 5. Very important point. So the third number point is called Sue stream point. In the same way, in the heart meridian, we are having 5 points, like heart 9, heart 8, heart 7, heart 4 and heart 3. The third number point is called Sue stream point. In the same way, in the pericardium meridian, we are having pericardium 9, pericardium 8, pericardium 7, pericardium 5 and pericardium 3. The third number point is called Sue stream point. The Sue stream point is the point who can treat entire meridian. वो पूरे के पूरे मेरिडियन में को ट्रीट कर सकता है. इस मेरिडियन में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकता है. सपोज someone is suffering with a lung problem, you can work on the lung 9. Someone is suffering with the heart problem, you can work on the heart 7. Someone is suffering with the pericardium problem, you can work on the pericardium 7. So in this way, someone is suffering with any problem like spleen meridian, liver meridian, kidney meridian problem, you can work on the third number point. So Sue stream point is the point who can treat entire meridian. So CMP point is like the Sue stream point. यह Sue stream point की तरह होता है. Because it's like a Sue stream point, so who can balance whole meridian? The full form of this is control measurement point. Who control entire meridian? CMP, control measurement point. The CMP points are the point who can treat the entire meridian. Now, where is the CMP point located? It's very simple. We are talking about our fingers. हम जानते हैं कि हमारे फिंगर का न्यूट्रो जॉइंट कौन सा होता है, या पित्ता जॉइंट कौन सा होता है, या मिडिल जॉइंट कौन सा होता है, बताइए.
कुछ लोग सुजोग करते हैं, कुछ लोग ट्राइरोजन करते हैं. विच इज द न्यूट्रो जॉइंट ऑफ द फिंगर? कैन टेल मी? Middle joint. सो द Middle. मिडिल जॉइंट. मिडिल एक तो नीचे है, एक सबसे ऊपर है और एक बीच में. दैट इज द न्यूट्रो जॉइंट. जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर, दे आर टेलिंग इट पित्ता जॉइंट. सो न्यूट्रो जॉइंट और द पित्ता जॉइंट, जो भी सीएमपी पॉइंट होता है वो यहां पर पाया जाता है. नाउ आई विल शो यू द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट. So the CMP point available on the middle, the middle part of this. Okay. So before proceeding further, I will show you the image of bones. मैं आपको एक बोन की इमेज शो करना चाहता हूं. Let's see here. So look at now. We can see this person. We can see the bones here. I am giving the example of some other bone. चलिए हम किसी दूसरी बोन का एग्जांपल लेते हैं, just for understanding purpose. Okay. So let's take the example of this bone. So whenever we talk about the Dr. Bull point, actually Dr. Bull points are very, very important point किसी भी बोन के एक तो मार्जिन में होते हैं. If we talk about the Dr. Bull point, they are available here on this margin or on this margin, exactly attached with the bones. Or if we go on the other side, on this margin or on this margin, these are the location of Dr. Bull point. Okay, let's see the other bone. हम दूसरी बोन की बात कर लेते हैं. Suppose if I see the bone of thumb, मैंने ये thumb की bone की बात की. So the Dr. Bull point will be available here on this margin or on this margin or on this margin or on this margin, exactly on the corner of the bone. Let's see the other joints here. If I talk about this middle one, चलिए हम middle one की बात करते हैं. Let's see this. Okay, let's see this. If we look at here, so Dr. Bull point will be available here on this margin, this margin, this margin, this margin, like this. ये margin पर होते हैं. So whenever we are working on the Dr. Bull point, please feel the points very properly. Okay, let's see one other image. Okay, so now I will go only with one bone. Okay, so Dr. Bull के point side में होते हैं. We have to turn on the side, and the Dr. Bull point are not located front or back. The Dr. Bull point is located on the side here. Okay, now for understanding purpose, I will go with the other image. मैं आपको एक दूसरी image के पास लेता हूँ. Give me 1 minute. तो चलिए अब आपको बताना है, मैं पूछूंगा आपसे. तो डॉक्टर बोल के पॉइंट्स, सपोज दिस इज द जॉइंट्स, ये हमारे जॉइंट्स हैं. सपोज आई एम गिविंग द नेम ए बी सी एंड डी. यू हैव टू टेल मी विच इज राइट. Okay, so the Dr. Bull point are available here. Dr. Bull point are available here.
Doctor Bull point are available here. Doctor Bull point are available here. A, B, C, D, which is right? A and B. A, B. A, B. I will tell you. B. 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 Okay, maybe. So if I will go little inside with the bone, that is the right. Okay. So B. my intention to go with the on the side. तो मुझे side में जाना होगा. So I have to go on the side. See, Dr. Goal points are not available on the front side, but they are available here on the Right. So now if you look at my finger here, अगर आप मेरी फिंगर को देखें यहाँ, तो क्या डॉक्टर बोल के पॉइंट यहाँ होंगे या यहाँ होंगे? Dorsal side. Dorsal side. Lateral side. So डॉक्टर बोल या बीच में मिडल में होंगे. They will be located on the middle side. And they will be touching the bones. Okay, whenever we are trying to put the Dr. Ball point, we have to feel the bone. Then suppose we are putting the magnets. अगर हमें मैग्नेट लगाना है तो हमें पहले जाना है साइड में बोन को फील करना है और फिर पॉइंट लगाना है. We will see in the practical part. So Dr. Bull are not located here, but they are located on the most of the side. I am telling about special 8 meridian given by Dr. Bull, like we have discussed joint degeneration, nerve degeneration, all. तो वो साइड में होंगे, राइट? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है. तो डॉक्टर बुल ने कहा कि इन चाइनीज लोगों ने फ्रंट ले लिया, बैक ले लिया, तो उन्होंने कहा चलो इन्होंने बीच का छोड़ दिया, तो डॉक्टर बुल ने बीच वाला पार्ट ले लिया. तो सीएमपी पॉइंट कहाँ होता है? कौन सी जॉइंट के पास में होता है हमारा सीएमपी पॉइंट? अपर जॉइंट, Middle joint. मिडल जॉइंट. Fifth joint. ओके फाइन. सो नाउ आई विल शो यू. अच्छा बताइए थंब का मिडिल जॉइंट कौन सा है? थंब का फर्स्ट वाला जॉइंट, ऊपर वाला. थंब का तो एक ही जॉइंट है, ऊपर वाला है ना, तो ये इसी मिडिल जॉइंट को काउंट कर लेंगे, राइट? वी विल काउंट दिस एज ए मिडिल जॉइंट. बाकी तो हमारे पास मिडिल जॉइंट्स है. सो नाउ लेट्स सी हियर. So now we are discussing the CMP joint. हम CMP joint की बात कर रहे हैं. तो अभी आपको नहीं पता कि what is the lymph meridian all, but just for example I am giving you this idea. So the CMP point of the lymph meridian exactly below the middle joint, that is CMP point of the lymph meridian, right? Okay, but is the meaning of that we will discuss shortly. Other than this, सर जॉइंट पे कहाँ है? ये तो जॉइंट से ऊपर है थोड़ा. देखिए अगर आप इस इमेज को देखें गौर से, L/12 ये जॉइंट यहाँ. इस इमेज को देखिए, ये जॉइंट है, राइट? हाँ ये जॉइंट है. ये जॉइंट है और हाँ सीएमपी पॉइंट इसके ऊपर आएगा, राइट? अच्छा, सीएमपी पॉइंट इसके ऊपर आएगा, ये आएगा सीएमपी पॉइंट इसका थंब का नीचे आएगा, थंब का नीचे आएगा. देखो के नीचे अभी आएगा. आपको पता सीएमपी जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऊपर ही आएंगे. केवल थंब का जो सीएमपी जॉइंट है कुछ ऊपर आएंगे कुछ नीचे आएंगे, लेकिन आएंगे सब मिडिल जॉइंट के आसपास ही. जितने भी सीएमपी पॉइंट हैं सब मिडिल जॉइंट के आसपास ही मिलेंगे, कुछ ऊपर मिलेंगे कुछ नीचे मिलेंगे, लेकिन बहुत ही इट्स वेरी इजी. इफ वी गो थ्रू वंस यू विल सी क्विकली. अब आपको मुझे बताना है कि ये जो सीएमपी जॉइंट है ये लंग का है, ये ऊपर है कि नीचे मिडिल जॉइंट के? 1 minute. So this is the CMP joint of lung meridian. Whether it's on the upper of the middle joint or the lower of the middle joint. Lower of the middle. Lower middle.
So now anyone is suffering with the now anyone is suffering with the any problem the lung meridian. अब किसी को lung meridian की कोई भी तकलीफ हो जाए lung में, you can treat just by this one point that is called CMP point of the lung, because CMP point of the point who can treat the entire meridian, right? Okay. Now I'm going back to the previous image. ये हमारा lymph meridian का CMP point है. This is the CMP point of the lymph meridian. ये हमारा middle joint के ऊपर है या नीचे है, whether it's on the upper or the lower side. ऊपर. कैसे? Can you explain? मिडिल जॉइंट से नीचे है सर. ये middle joint है. Lower. ये भी लोअर है और ये भी लोअर है, दोनों एक ही जैसे है ना? आप हाथ उल्टा है. क्या उल्टा रखा है तो सीधा रखेंगे तो ऐसे दिखेगा नीचे. देखो, हाँ, इसमें नीचे आएगा. मेथड बता दीजिएगा. इसमें बोल सकते नीचे है. अच्छा ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर. ये कंफ्यूज हो गया था. नीचे ही बोलना है, ऐसे करो तो भी नीचे बोलना है, ऐसे करो तो भी नीचे बोलना है. अरे ठीक है सर. है ना? ओके. ओके फाइन. ये क्या हुआ? ये क्या हो गया व्हाइट बोर्ड? ओके, तो देखिए ये हमारा ये कौन सा मेरिडियन है? बाहर की तरफ हमारा lymph meridian. लिम्स. now I want to put the lymph meridian. I will go here on the side and I will feel the bone. मुझे क्या फील करना है? Bone. डिप्रेशन. Bone. And I will feel the depression here, slight depression here. And after feeling the bone, I can put this point, right? I will put the magnet, I will put the star magnet, I can put the Mathy seeds, or I will use the electrostimulator and I will stimulate this point and it will do lymphatic drainage. तो यहाँ निडल तो लगा सकते हैं. हाँ लगाते ना, we can put the needle also. तो योग हम निडल भी लगा सकते हैं. हम देखो जी. क्या है, we have the target, हमें लक्ष्य मिल गया. अब लक्ष्य को निशाना कैसे लगाना है वो हमारा मन है. अगर आप इंडिया में हम सब लोग मैग्नेट लगाते हैं, हम निडल्स भी लगाते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टिमुलेटर का भी यूज करते हैं. सो वी कैन चूज एज पर अवेलेबिलिटी एंड एज पर अवर कंफर्ट, एज पर द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट. नाउ इफ यू आर गोइंग ऑन द इनर साइड, अब हम अंदर की ओर गए. सी ये था बाहर, नाउ ये अंदर. वी आर गोइंग इनर साइड. So now we are feeling the uppermost border below this middle joint. ये हमारा CMP point किसका है? Lungs. लंग्स. So this is the CMP point of the lung. Now we can put the star magnet here. It's a very good for lung disorder. तो हमें क्या करना है? जब भी हम CMP point करेंगे, another technique what we can do, हम इसे trace भी कर सकते हैं. Like we will put the point our other thumb here. First we press and push little up. Press and push little up and hold this point for 15 seconds. हम इसे 15 सेकंड के लिए होल्ड करें. ऐसे पंप करने की जरूरत नहीं है. Just we hold this point for 15 seconds and we can Yes, sir. Yes, sir. even we can work. थोड़ा सा okay. ये 2 point are clear. The outside is the lymph meridian and inner side is the lung meridian. Okay. सर स्टिमुलेट कितनी देर करेंगे? जी क्या बोल रहे हैं? पेन से स्टिमुलेट कितनी देर करेंगे? पेन से, इलेक्ट्रो पेन से. पेन से हमें स्टिमुलेट करना है ओनली मैक्सिमम 20 to 30 seconds. Okay, okay. 20 to 30 second stimulation with the pen is enough, right? Yes, sir. Yeah. So can you show the pen? Yeah, I will show you because today is the day one, so I will show you. Sorry, don't worry. I will show you all the tools. सर जो आपने ये LU10 पे मतलब लंग्स के जो CMP पे बताया प्रेस करना, ये हम प्रोब से भी कर सकते हैं ना, उठा के जरा Yeah, you can do with the probe. Yeah. Okay. Probe even like sometime what is happening because if you feel your thumb is paining, you can do with the probe. आप करके देखिए, थंब से भी बड़ा अच्छा होता है ना? थंब से भी बड़ा अच्छा होता है. जैसे कई बार क्या होता है, we are doing the treatment and after that we are telling the patient okay you have to press this 15 second morning 15 second evening, तो हमारे results और बढ़ जाते हैं, right? Because we have given some homework to the patient. हम सारे patient point patient को नहीं दे सकते, but CMP point दे सकते हैं.
CMP point is very easy to detect. Like I will show you the CMP point of the heart also. और जो CMP point of the heart का जो हमारे heart का CMP point है, it's really very good, and we can tell the patient, okay, you press this point. Suddenly someone is calling you, okay, I'm having some problem, can you tell me some points? To mark the area and tell this is the press this point, okay. So we can use in both the thumb, हम दोनों ही thumb में कर सकते हैं. आगे चल के आप समझोगे कि जब हम lymph meridian को treat करते हैं, so whenever we are treating the lymph meridian, so the lymph meridian is going like this. So it's very good for the frozen shoulder. It's very good for the problem of the breast. It's very good for the some growth in the breast, and it's doing the very good drainage from this side. तो हमारे lymph meridian में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं. कोई अपर बॉडी का ड्रेनेज करता है, कोई मिडिल बॉडी का ड्रेनेज करता है, कोई लोअर बॉडी का ड्रेनेज करता है. सो वी आर वर्किंग ऑन द lymph meridian. लेकिन हम lymph meridian पर वर्क करके हम पूरी बॉडी का lymphatic ड्रेनेज कर सकते हैं. Someone is having swelling in the feet, we can work on the lymph meridian, because lymph meridian is very good for swelling, edema. शरीर के किसी भी भाग में होने वाली सूजन के लिए, edema के लिए it's very good. Generally in the TCM we work ipsilateral. जिस तरह प्रॉब्लम हम उसी तरफ करते हैं, और we can go bilateral, या हम bilateral भी कर सकते हैं, right? Any questions? Yes, प्रीति जी. सर आपकी मेल आई है एक, हेमंत शर्मा स्क्रीन शेयर के लिए, ये ऐसा दिख रहा है? सर मुझे फीडबैक देना था जब मैं नहीं प्रकाश जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं. चलो मैं बाद में आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा. हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या बोल तो रहे एक क्वेश्चन है. हाँ. आपने बोला 15 सेकंड के लिए हम लगा सकते हैं, थंब को लगाना है, पंप नहीं करना है, राइट? हाँ हाँ. तो मेल का पॉजिटिव होता है, राइट थंब इज मेल का नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज, तो सेडेशन हो जाएगा. नहीं, यहाँ पर हम सेडेशन टोनिफिकेशन, वो हम फिंगर, जो क्या होता है ना कि हम अभी टोनिफिकेशन सेडेशन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्यूप्रेशर के हिसाब से कर रहे हैं. जैसे किसी ने बोला उसे राइट कंधे में दर्द है, हमने राइट हैंड पकड़ा और उसे प्रेस कर दिया 15 सेकंड के लिए. तो क्या होता है, अब आप एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हमने क्यों बोला. I have done, because I was working, I'm doing treatment many times, I'm doing some other treatment I'm doing, and I just want to praise the points. I have seen this. When we pump the point, it creates different effect. When we just keep pressing the point for 15 to 18 seconds, it creates better effect than the pumping. You can try and you can also discover this. आप किसी भी पॉइंट को ऐसे प्रेस करके रखो, LI4 को प्रेस करके रखो 15 सेकंड, सेकंड LI4 को पंप करो. As per my experience, I found just keep pressing for 15 seconds give more results. You can also discover as per you. This is my experience, so I am sharing, right? So that's why I told hold the point and press for 15 to second, near about 15 seconds, right? I am not focusing on the north pole or the south pole of the finger chakras. मैं अभी उस पर फोकस नहीं कर रहा. ओके सर, थैंक यू. Sir, will it be helpful in if the patient is very sad that time if we it's a very very helpful, because sadness is having connection with the lungs as well as the heart. Okay. So accordingly we have to find out, okay, this person is suffering with this emotional problems, and meridian we should treat. हमें कौन से meridian को treat करना चाहिए? Yes. meridian को हम treat करेंगे और उसके इमोशन पर वर्क करेंगे, राइट? इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव. लाइक समवन इज हैविंग एनी टाइप ऑफ द इमोशनल इश्यूज, एट लास्ट वी आल्सो हैव टू वर्क ऑन द हार्ट. हमें हार्ट पर भी काम करना होगा, राइट? Yes. या डन. कैन वी I wanted to share one feedback about the lymph meridian. जब मेरे बेटे का हार्ट डिसलोकेट हुआ था while playing, so I repaired that with Voll, Dr. Voll. I had learned from you with the lymph meridian and skin meridian and spleen meridian I had used, and I had repaired it. very It nice. got repaired very fast, the dislocation. Because he is sporty, like he is very like I think state level Table tennis player, badminton player, right? So it's a really very good for a sports injury, like
sports persons as Preeti ji has done on this. Very nice. Can we proceed now? Any questions? Yes, sir. Okay. So now I will show you the another point. For just सर one question please sir, one question. yeah. सर needle कितनी देर लगा सकते हैं यहाँ पर? So actually the timing of needle I will tell you. The insertion of the needle is very person to person. Like I have seen many person are telling put the needle for 28.8 minutes. Master Tung tell, okay, you put the needle longer, you will get the more results. But finally, after doing lots of experiments, I found do not put needle more than 30 minutes. Do not put needle. Just remove the needle, because sometimes what's happening, we are putting the needle, it's creating very good results, but for longer, then it's not creating any results. On the contrary, sometimes the problems is just what result you can create in the 20 minutes or the 30 minutes, that you can create more results from that. So the maximum duration of the needle is 28.8 minutes or 30 minutes lump sum. You can count, right? Okay. Done. Yeah. Yes. Yes, please. Jayanti ji, yeah. Can we use it for thumb pain, sir? Thumb pain. Thumb pain. Thumb pain. Yeah, okay. Someone is having the pain in the thumb, so we can use right? Holding anything. Yeah. So pain in the thumb, you're asking, right? Yes, sir. Yes. Yeah, actually, I will tell you when the person is having pain in the thumb, that is due to the median nerve compression. Compression in the median nerve. So we will work on the nerve degeneration meridian for that. Because see, the median nerve is coming from here, then going here, and half of the ring finger. So the person is having pain in the thumb, we have to work on the median nerve. Median nerve will work on that. That's why we have to find out what is the root cause, and accordingly we have to work. Okay. अगर हम उंगलियों में निडल लगाते हैं, हम सुजोग निडल लगा सकते हैं. अगर हम बॉडी में लगाते हैं तो हम बड़ी निडल भी लगा सकते हैं, या फिर हम बड़े वाले मैग्नेट यूज कर सकते हैं जिसे हम मेगा बियोल मैग्नेट कहते हैं. यस, ओके, फाइन. सो नाउ I think it's already 8:30. So now we'll continue discussion tomorrow. अब हम कल प्रश्न आगे का हम कल समझेंगे. आज की क्लास में okay, fine. So I was telling Mr. Sumul ji, I was telling that she asked us, the person is suffering with a thumb pain. So can we apply the point here? Then I told, when the person is suffering with a thumb pain, that is due to the compression of the median nerve. Median nerve. It might compress here, somewhere, break in the break, anywhere. So mostly we have to think about the nerve degeneration meridian, which we will discuss later on. Okay. So in this way we have to make the treatment planning. सर मेगा बियोल जो है वो सेडेशन साइड से लगेंगे या मतलब येलो साइड और व्हाइट साइड? Sedation or toning? Sedation and tonification depends on the conditions, like whether the acute condition, chronic conditions. So it's purely depend on the conditions. Sedation, tonification is never fixed. Like someone is suffering with a nerve problem like trigeminal neuralgia, very acute problem. We have to sedate. But someone is having some chronic nerve problem, chronic nerve injuries, and dull pain, then we have to see whether we have to sedate or not. It depends on the conditions, right? Are you getting my point? So tonification, sedation, always we have to think about during that time only. We cannot fix it. But suppose she is having thumb pain, it is very acute pain, then we can sedate it. We can sedate. But the dull pain, chronic pain, then we might have to tonify. But Dr. Voll has used even method on most of the points, even method. Dr. Voll.
सर स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं उस टाइम पे जब आप कंफ्यूज हैं कि आप टर्न करें या स्प्लिट या करें? सो द स्टार मैग्नेट का मतलब है कि इवन मेथड, आप वही सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है, गो विद स्टार मैग्नेट। ओके सर, आप एक नीडल का बता रहे थे कि मैक्सिमम 30 मिनट्स होना चाहिए, तो मिनिमम टाइम भी कुछ होता है ऐसा कि मिनिमम इतना लगना ही चाहिए? Yes, yes. So as per the many authors, like I will tell you, even we put the needle and remove the needle, even it's create the results. Okay. So suppose if you want to do the very minimum time treatment, then there are two time, 8 minute and the 15 minute. 8 minute and 15 minute. When we put the needle for 8 minute, it will do activation. Activation. Suppose some person is very old person, a very tired person, very big person. We will put the needle for 8 minutes and we'll remove it. It will do activation. It will improve the energies, increase the energies. But if we put the needle 15 minutes, then it will calm down. It will activate the parasympathetic nervous system. It will relax the system. So we have to decide. Suppose some old person is coming. If you are putting the needle for longer time, he might feel tired after the treatment. Okay. So this way, we can divide. Many person doing in this way also. 8 minutes to the 15 maximum time. Okay. Into say कि person to person अलग-अलग हो जाएगा. I am putting needle for minimum 20 minutes. I am putting needle minimum 20 minutes. Put the needle. Okay. तो आपने 30 मिनट्स बताए थे नीडल. 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए as per my experience. If you are having some different experience, you can also share. Okay, No, I'm using 30 minutes because आपने पहले बताया था 30 minutes, so I'm putting 30 minutes. You are putting 30 minutes is a good time. Like every doing different experiment, I will tell you, if you want to put the needle for 2 hours, for example, 2 hours, then after every 20 minutes, you have to manipulate the needle, then only it will work. So I'm using जैसे मान लो for एक पैरालिसिस का पेशेंट है, एक पैरालिसिस का पेशेंट है और आपने 2 घंटे निडल लगा दी, तो आपको हर थोड़ी देर में 20 मिनट में उस निडल को थोड़ा मैनिपुलेट करना होगा, तो ही सही रिजल्ट आएगा, नहीं तो वो बॉडी यूज टू हो जाती है. जैसे आपने यहाँ पर पहन लिया या पहन लिया, बॉडी यूज टू हो जाती है, उसकी बॉडी गेट यूज टू. सर उनको जो सिमुलेट करते हैं तो लेफ्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ्ट करना है, ऐसा कुछ है? जी, कैन यू रिपीट? जब हम नीडल को आप कह रहे हैं ना सिमुलेट करना है, तो उसको क्लॉकवाइज करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए, ऐसा कुछ है? यू आर आस्किंग फॉर द सेडेशन टोनिफिकेशन? नो सर, जब आप नीडल बहुत देर तक लगाते हैं उसको बीच बीच में आप कह रहे हैं ना उसको सिमुलेट करना चाहिए, तो उसको मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए सर? So when we talk about the manipulation, there is many method of the manipulation. Right now, I'm telling just hold the needle and do little pumping for 15 seconds, right? That is the yes. If you're working with a needle, if you're having some paralytic patients and some like acute paralytic patient, he got paralysis now maybe last week or 15 days back or 1 month, then we can put the needle for longer duration and stimulate the needle after every 20-30 minutes and it gives result. Otherwise, don't put the needle for more than 30 minutes. Otherwise, it will bring tiredness. सर 30 मिनट्स लगाएंगे तो भी हमें मैनिपुलेट करना है बीच में, या वी कैन जस्ट लीव इट? No need. सर आपके मास्टर टंग के प्रोटोकॉल हैं जो आपने बताए दिए हैं हमें, तो उसमें आपने 45 मिनट्स बताया था, तो हम 45 मिनट्स यूज करते हैं उसको. Actually, मास्टर टंग का जो कंसेप्ट है ना अलग है. Master tongue is having different concept because master tongue concept is telling longer the needle, longer the results, right? But in the clinical practice, I have not observed that. हमने clinical practice में ऐसा observe नहीं. Clinical practice में हमने देखा है लिंगू लगाया और पेन गायब, on the spot गायब.
पेशेंट इज So very excellent result in limbu dabai. या तो जब पेन, जैसे वन पेशेंट केम टू मी, कैन यू ट्रीट माय लोअर बैक पेन, बट प्लीज आई वांट टू एक्सपीरियंस हाउ योर निडल. आई पुट द निडल, रिमूव्ड. फ्रॉम दैट डे onwards he never got pain. So now telling, now why do the treatment, I don't have pain. And then I told, Yes, okay, sir. do at this. Yes, sir. So Classical, sir. Classical. Very classical. so the thing is this now, if we are getting the results in 10 seconds, then why to keep for 1 hour? Okay. So we'll be learning that limbo points also? No. We are going to learn very effective different points given by the Dr. Voll. He asked about the master tongue. So this is the master tongue language, lingo davai. Because see, everyone is having, if you learn Dr. Voll now, you will become master and experts. So focus on the Dr. Voll. Dr. Voll is a very huge system. Okay. Even I am very much scared. How will I cover this much vast syllabus? But anyway, I have started, then I have to cover it. Sir, I have a question, sir. Yeah. So we learn diagnosis by TCM, right? Now then we have to apply to Dr. Voll. Is that possible? Like we learn lung chi deficiency, stomach yin deficiency. Is it possible to treat by Dr. Voll? Definitely yes, because Dr. Voll has done very simply, has simplified the method. Like he has told, okay, uric acid work like this. Okay, person is having diabetes, sugar imbalance, work like this. Okay, so Dr. Voll has simplified the things. But if you are having, if you know this concept, lung chi deficiency or the spleen chi deficiency, definitely it will help. Because see, if you are having the knowledge of some other concept, it will definitely one add on for you. It is going to work for you, right? You will able to understand. Suppose if you know what is the spleen chi deficiency, and now we are discussing the person is having low hemoglobin, work on his spleen. Okay, his hemoglobin is only 8.5, which is very less, work on the spleen. You will quickly correlate, okay, he's having spleen chi deficiency. Then you can also ask some questions about the spleen chi deficiency. You can cross verify. So knowledge is always good if you are having some add-on knowledge. Okay, sir. So can we join directly second Can we point directly? level because first level if completed? Directly second level because first level completed? I did not understand. You want to jump on the level 2, right? Yes, because level 1 complete हो रखा है, करा हुआ है. आपने कहा हम मुझसे किया? हाँ जी sir. हाँ, then you can go for level 2. Okay. So for star magnet, what is the minimum or maximum time? Sometimes body also give the signals to remove the magnet. Yeah, that is also true. The minimum for the star magnet, we can go a little longer because see, a star magnet, we go for 2 hours. Okay, for some time for 4 hours. Okay, but I will tell you, don't put the magnet even for too long time. Body जैसे उदाहरण बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, बॉडी विल स्पॉट कौन से बच्चे उधर मचा रहे हैं, तो body will stop responding if you are putting the magnets or the needles or anything for too long a time. Okay, so select the some good time, 2 hours. But sometime after putting the magnets, if patient is telling you, I'm having nausea, I'm feeling some discomfort, then remove them. But remember one thing, whenever do any treatment, your patient should be hydrated. Hydrated means आपके पेशेंट ने पानी पिया हो, जूस पिया हो. पेशेंट को जब भी आप ट्रीटमेंट देते हो तो वो हाइड्रेटेड होना चाहिए, है ना? क्योंकि आई हैव सीन इन द इफ द पेशेंट इज नॉट हाइड्रेटेड देन समटाइम नोशिया, सम डिफिकल्ट कंडीशन दैट ऑल. तो पेशेंट पहले आता है, उसको थोड़ा सा आधा गिलास पानी पिला दो, गिव सम वाटर, और इफ यू आर very like if a patient is good, very good for you, you can offer some juices, something different. Like patients should be hydrated, then do the treatment. Otherwise, sometimes we can see fainting in the clinic. Patient suddenly faint. It will never happen if your patient is well hydrated, right? So in second part, you will cover extra point of other meridian also in level 2. Level 2 में जो syllabus दिया वो cover किया जाएगा. नहीं, इसमें आपने बताया है, मतलब वो अलग मेरिडियन के पॉइंट्स कवर अप किए जाएंगे बाय गिवन बाय डॉक्टर वॉल.
मैंने वो मिस कर दिया कि आपने बता दिया? आप वीडियो देख लीजिएगा, जो सिलेबस में दिया वो सब बताएंगे, राइट? ओके सर। है ना? सर आपका ये प्रेजेंटेशन मिल सकता है क्या? बिकॉज सारे पॉइंट्स जो है हमने नोट नहीं किया जो आपने लिखा था। हम इसका वीडियो भी थोड़ी देर में पब्लिश कर दें, ठीक है? थैंक यू। ओके, एनी क्वेश्चंस? क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। Yeah. फर्स्ट टाइम जब हम यूज करते हैं कोई भी ट्रीटमेंट वेन एवर वी गिव, सो इट गिव्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली 75% immediate relief, Yeah. and then it takes the speed slows down. Yeah. Actually, it happened because of the excessive treatment. So that's why we never do excessive treatment. There are many persons having habit to do the treatment every day. Doing treatment every day is not good, because body needs some time to reset. Body needs time because healing happen between two treatment. We don't heal the patient. We do something and body is having its own blueprint. बॉडी के पास अपना खुद का ब्लूप्रिंट है और वो खुद को खुद ही हील करती है। हम बॉडी को बस एक माध्यम देते हैं, है ना? अब देखो, जब किसी को फ्रैक्चर होता है तो क्या हड्डी को हम जोड़ते हैं क्या? हम तो बस बांध देते हैं, हड्डी अपने आप जुड़ती है कि नहीं जुड़ती? when getting fracture, what do? We just cutting the bone and it get attached automatically. So we are just medium. We just give a proper environment. Healing happen between two treatments. So you should give time. Sometimes you can give one treatment, 2 days break, one treatment, 2 days break. If the person is very old, tired, weak, then you should give handsome gaps between two treatment. One treatment, 2 to 3 days break, then treatment, then 2 to 3 days break. If you are giving treatment every day, you will disturb entire chi of the body and results will not come. And if it come, patient will get some other problems. So आपने alternate days बोला था ना? So alternate days. Yeah, alternate days is good task. मानो कि आपका पेशेंट बहुत कमजोर है, बहुत ही टायर्ड है, तो आप Parkinson patient. Yeah, yes, Parkinson patient, if it is old and it is more than 70, and if you are giving too much treatment, especially using the needles, then it might create weakness. So what you can do, you can make the very good plan. Suppose today you are giving some treatment, then you do 2 days break, then give another treatment. But you think I can't give 2 days break, then you can give some other treatment. We are because we know lots of treatment. We know moxibustion, we know cupping, we know gua sha. Yes, sir. Having lots of idea. Do some treatment in the cyclic manner. Yes, sir. I'm following what you had, suggested is I'm doing needling and then giving moxa next day. Then needling other means not on the same points, but other points, other protocol. Still you are doing excessive treatment because see, you are not giving any break. You are just giving treatment, then moxa, then treatment, then moxa. Patient needs some break. Okay. If you're not giving the break, then results will decrease. You will realize after giving too many treatment, means maybe other person will give 5 treatment and will get the results. You will be giving 20 treatment and will be getting the same results. Right? So the thing is this, gap is required because body needs time to body को heal करने के लिए समय चाहिए होता है. So basically twice a week treatment is good? No, you can go thrice a week. Thrice a week is good time, but if patient is very weak, very tired, old person, then do lesser treatment. But if someone is having some acute injury, suppose some sports injury, fall down, acute pain, then you can give some intensive at the biggest treatment. तब आप ज्यादा कर सकते हो, इवन रोज भी कर सकते हो. कभी कभी हम सुबह शाम भी कर सकते हैं. किसी को पैरालिटिक अटैक आ गया, सुबह शाम भी कर सकते हैं. वी कैन डू मॉर्निंग इवनिंग. But if the patient is having Parkinson disease or patient is having chronic knee pain, maybe initially 2-3 days you can do daily treatment, but after that give the handsome break. So handsome means 1 week break. Handsome means like 1 day treatment, 2 days break, 1 day treatment, 2 days break. Even if the patient is very much committed with you,
then you can give Yes. once a week also. But many patients are not committed. If you ask them come once a week, then they will come 1 time, 2 time, and they might not coming to you. Because patient के ऊपर भी एक वो आता है, नहीं मुझे ट्रीटमेंट करना है, और वो 15 दिन 20 दिन तक उसके पर वो ढीला पड़ जाता है थोड़ा, है ना? Sir, the duration of this course will be how long? First and second level? See, I will take there's too many classes will be there. Too many classes will be there, and you have to agree for many. Sir, multiple treatments can be done for various different problems all at one go. Actually, body will get confused now. Suppose I will tell you, I'm eating the food. During the eating the time, I'm also using the mobile. Also, you are putting the needles. So body, you're using the mobile, body has to send lots of blood to the eyes. You are eating the food, body has to send lots of blood to the abdomen for stomach. And you're also using the needles. So acupuncture means you're using the body energies, you're using the body jing for healing purpose. The body confused, like if you're doing lots of treatment, multiple treatment, maybe I will tell you, initially it might be good, but for the long term, it will not be good idea. For multiple disease, you find out the root cause and try to make one protocol which will work on the multiple disease, right? That is a good idea. तो आप कर सकते हो, इनिशियली कर सकते हो, जैसे मैं भी करता हूँ. कई बार मेरे पास कोई पेशेंट आया, one patient is suffering with a lots of one patient is suffering with a knee pain. Then I am working on the lower back, I am working on the abdomen, lower abdomen, I am working on the knee area, I am working on the muscle above the knee, muscle lower the knee. I am working in this area. So initially I might work more, but I cannot keep doing for month to month. No. Initially 4 days, 5 days, 6 days is okay. Are you getting my point, what I want to tell you? Yes, thank you, sir. I've understood. So one more question. Yeah. So there are different modalities of treatment, like this TCM, Master Tongues, EAV. So at one point of time, we should put only one type. No, it's not like that you have to put one treatment at one time, but it is, you can do the combination, but at a time there should not be too many points. Select the points, like you can use 2 points of the master tongue, you can put 2 points of the scalp, you can put 2 points on the auricle, there is no issue. You can put the Dr. Voll, but the total number of points should not be too many, otherwise body will get confused. Okay, sir. Yeah. The total points 10 आपने बोले थे, so I'm using 10 maximum. Actually, it depends on, it's never fixed. Like if you go to Sri Lanka, they are putting 40-50 points, 40-50 points. Okay. Oh. Keep doing. Like if you tell lower back pain, in the lower back, he will put for 20 needles, then we'll go to the knee, then we'll go to the ankle, they will all the distal points, then we'll come to the scalp, they will put in the scalp point and the hand point. So 50 needles, 52, because one patient came, doctor, you are putting only 16 points, but I went to Sri Lanka, he has put the 70 needle on me, 70. Then I tell. So you had suggested that EAV points, extra ordinary point. Extraordinary, right? So EOV, yeah. So EOV points, MP I'm putting, and then in middle I'm putting others, and then last CP. That's how I'm doing it, because that's what you had suggested. Yeah, that is the okay. EOV That is okay, right? No issue. That is okay. Yeah, because I'm following what you had told in the EOV class. We do in the same way, right? Okay, sir. Thank you. Yes, Karisha ji. Hello, sir. सर अपना Hello, माइक sir. थोड़ा सा ऊपर लगा लीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी क्लियर नहीं है सर, थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए, आपकी आवाज कम आ रही है। माइक के बिना ही बात कर रहा हूँ, माइक है ही नहीं। क्लियर है आवाज, एकदम आवाज शार्प सही है सर। सही आवाज। मैं देखता हूँ कल यहाँ मैं एक माइक भी लगाऊंगा, लेकिन आज मैं माइक का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना माइक की क्लास ले रहा हूँ। सर तो ऑफिशियली क्लास कब चालू होगी? ऑफिशियली क्लास 30 जून से स्टार्ट हो चुकी है। So today was the first day? Yeah. Okay.
जो पहला नमस्ते है सर। वही वही ऑफिशियली डे 1 होता है। ये क्लास का वीडियो भी डे 1 से अपलोड होगा, लेकिन ये सबको अवेलेबल रहेगा आपके लिए। सर कल क्लास 7:30 पे स्टार्ट होगी क्या? 7 PM? 7 o'clock टाइम है, क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट हो सकती है। 7 o'clock सर 7। 7:30 पे कर दीजिए सर प्लीज। देखो अगर मैं अभी समय की बात करूंगा ना तो सबका सर फिर हमारे दूसरे सेमिनार भी होते हैं, जैसे पाटीदार सर का 8 बजे अभी शुरू हो अभी रहा है मैं सेमिनार। क्लास, हाँ अभी मैं क्लास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने सभी बैच में सबको बोला है कि सबको जल्दी सोना है ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से। If I am finishing my class by the 9 o'clock, 9:30, then everyone will sleep till 10 late. Then it will disturb the organ clock cycle. So from my side, I don't want to make delay. That's why I given the time 7 to 8. Sir, for how many months, like how many days is this whole program? Our program this Yes, sir. 4 month. Four, I'm four, planning to finish in 4 months. 4 months every day? Like initially, I will start Monday, Tuesday, and Wednesday. Then Okay. for level 2, I will take some extra days. Level 2, maybe. So, but sir, you'll finish level 1 first and then start level 2, right? No, it will not happen like when the level 1 will finish, then the level 2 will start. No, from the next week only, I will start Oh, 2 and the treatment of eyes, because that is independent treatment. Even we can learn from tomorrow. That not required level 1. The treatment of eyes, treatment of retina, glaucoma, right. and all. So that treatment I will start maybe this week only. Yes, sir. Let me finish on Wednesday. So level 1 and level 2 will go together. Okay, sir. Right. Thank you, sir. सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक सर चीज मुझे क्लियर ये करनी जानना है। था कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट में उनका फ्रैक्चर में अगर प्लेट लगा हो या रोड लगा हो तो उस समय क्या हम मैग्नेट या कुछ यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन यूज, सपोज, बिकॉज ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपको पैर में ही मैग्नेट लगानी है। पॉइंट तो हमारी हाथों में है, पैर की उंगलियों में है, आराम से लगा सकते हो। लाइक लिम्फ मेरिडियन है, हमारा नर्व डिजनरेशन मेरिडियन, जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन, वट एवर द पॉइंट्स अवेलेबल, वी आर हैविंग मेरिडियन पाथवे एंड वी हैव टू पुट द पॉइंट। किसी को पैरों में दर्द है, हो सकता है पॉइंट हाथों में हो। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पॉइंट पैंक्रियाज के अंदर तो नहीं होंगे ना, पॉइंट तो उंगलियों में होंगे या पैरों में होंगे। तो पॉइंट प्रॉब्लम कहीं की भी होगी और उसके पॉइंट तो दूर ही होते हैं, तो आराम से लग सकते हैं। सो हाँ वो सर, लेकिन मैग्नेट वो प्लेट होती है ना, तो वो प्लेट क्या स्टील लाइक काइंड ऑफ होती है, तो मैग्नेट क्या अट्रैक्ट नहीं करते इसमें? हम लेकिन मैग्नेट के ऊपर, हम प्लेट के ऊपर मैग्नेट थोड़ी लगा रहे हैं। जैसे किसी को पैरों में मैग्नेट है, हम पॉइंट लगा रहे हैं उंगलियों में हाथ की, तो मैग्नेट तो कितना दूर है वहां से, वो हमारी प्लेट तो कितना दूर है कि नहीं दूर? ओके। अब जैसे तो तो चम्मच आयरन रॉड यूज चम्मच से नहीं हो खाना, रहा है। आप चम्मच से खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? यस सर। चम्मच से खाना खाते हो, आप लोहे की चीजों को पकड़ते हो, उससे आपकी प्लेट थोड़ी खराब हो जाती है ना? हम उंगलियों में अगर मैग्नेट लगा देंगे तो पैर की प्लेट का क्या है, उससे नुकसान हो जाएगा? कुछ तो भी नहीं। प्लेट्स जो होते हैं वो आयरन आयरन के नहीं होते हैं, इसलिए मैग्नेट उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ ये भी बात है, लेकिन हम उससे तो कोसों दूर है ना, हम उससे बहुत दूर हैं। वी आर यस वर्किंग ऑन द मेरिडियन, जी सर, थैंक यू सर। सर एक बात हेलो क्लियर सर। करिएगा सर कि जब हम कोई भी पॉइंट लगाते हैं ये तो हल्का सा भी इधर उधर होए तो वो BM2 लगाना चाहिए, BM3 लगाना चाहिए सर? लाइक अगर हल्का भी इधर उधर हो गया तो रिजल्ट नहीं आएगा, बस इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं तो BM2 और BM3 में ऐसा है कि वो कवर करे, ऐसा कुछ है ऐसा सर? BM2 BM3 क्या? मैग्नेट का जो साइज होता है। अच्छा, बड़ा वाला। पियोल हाँ मैग्नेट, पियोल हाँ, मैग्नेट। प्योर मैग्नेट BM। हाँ, तो पूरा फॉर्म बोलिए ना, क्यों डरा रहे हैं? BM2 BM3 बोल के। ओके, तो क्या होता है ना कि अगर हम प्रिसाइज लोकेशन पर लगाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। हर जगह बड़ा मैग्नेट यूज करना, इट्स नॉट द गुड टास्क। लेकिन हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है, देन वी कैन गो फॉर द बिगर मैग्नेट्स। लेकिन अगर उंगलियों में है, उंगलियों में तो हम छोटा ही मैग्नेट लगाएंगे, राइट?
टू लगा सकते हैं। तो हम क्यों? मैम सर बियोल 2 यूज कर सकते हैं, मतलब उंगलियों में। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर बोल के पॉइंट तो बिल्कुल जरा जरा से हैं। हाँ जी We can सर। work on that point, or we can work with a star magnet. सर वो पेनफुल पॉइंट्स भी बता देंगे कि दिस इज द राइट पॉइंट, वहां पर पेनफुल पॉइंट मिलेगा? हाँ, कोई any points, if it is the real point, there will be little pain. That is the concept of our acupuncture, that the real points will be painful. But sometimes what we do, every time we just, when we are doing treatment for multiple patients, quickly we will find the point and put the point, because we know there's a CMP point of this, so we can just, but the little pain will be there. If you want to palpate, you can put the probe and you can find the pain there, right? Okay. So thank you so much, everyone. Done for today. Now we'll see you tomorrow by 7 o'clock. Good night. Thank you. Thank you so sir. much. Thank you. Good night Thank sir. you, sir. Good night Thank to you. all. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir.